Slides are not जो visible. जो पहले वाला आपको साल्ट एक Sir, slide is not visible. Please slide दिखा दीजिए. ओके बिल्कुल हाँ शेयरिंग वही कर रहे हैं. जो पहले नंबर पे है वो एक जो वो रॉ ओपियम है जिसको हम अफीम कहते हैं, कच्चा अफीम. दूसरे नंबर का पाउडर है. तीसरे नंबर पे आपको कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको बता रहे हैं. चौथे नंबर पे इसको इंजेक्शन के जरिए भी लिया जाता है वो बता रहे हैं. पांचवें पे एक इसको कैसे हम डोज बनाते हैं वो दिखाया जा रहा है. 6वें नंबर पे पेन किलर के कैप्सूल है जिसको स्पाज्मोप्रोक्सीमोन कहते हैं और बहुत सारे नौजवान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये फैशन ड्रग के नाम से जानी जाती है स्पाज्मो, लेकिन अब ये बंद हो चुका है. इसके जो साल्ट है उसमें फिर एक साल्ट था जो इन्होंने इसको हटा के दूसरा कोई साल्ट डाला है जो नॉन एडिक्टिव है. स्लाइड दिख रही है आपको? नहीं सर. आपको स्लाइड दिख रही है? नहीं दिख रही. वो जो शेयर कर जो शेयर अब आएगा. इसमें मुझे लगता है नहीं नेट की प्रॉब्लम है. नहीं वो कुछ सिस्टम की दिक्कत होगी. Sir, please start. We've shared the screen now. शेयर तो कर रहे हैं और हो नहीं रहा. नेट की प्रॉब्लम है. Actually, we are not able to see the screen, the slides at all. Let me share the screen. आप मेरे को co-host बना दो, मैं करती हूँ शेयर. डॉक्टर रुचि शेयर कर रही है और आई एम वेटिंग फॉर. सर रुचि के नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन. डॉक्टर मैं आपको बनाती हूँ. मैं बना रही हूँ मैम. एक सेकेंड दीजिए. Ma'am, you can share the screen now. Okay, just a minute. एक मिनट, I'm just doing it. We were here. बैक पार्टिसिपेंट प्लीज ये स्लाइड देखें. पहला जो है ये काले रंग का जिसको हम कच्चा अफीम कहते हैं, रॉ ओपियम में है. इसको गोली में भी खाया जाता है, स्मोक करते भी हैं. दूसरा पाउडर है जिसको हम नॉन मेडिकल प्रोडक्ट हीरोइन के नाम से जानते हैं.
ये भी ओपियम प्रोडक्ट है। तीसरा, जो उस हीरोइन को कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका बताया जा रहा है। एक सिल्वर फॉइल पे रखते हैं पाउडर को और उसको इनहेल करते हैं मुंह के जरिए। देन उसी पाउडर को एक दूसरा रूट है जिसको हम इंजेक्शन डिल्यूट करके इंजेक्ट करते हैं, और इस पाउडर को जैसे हम कैसे बेचना है और कैसे हमने इसको पैक करना है, एक छोटी सी पुड़िया जो हम होम्योपैथिक अपनी क्लिनिक पे भी बनाते हैं, लेकिन ये पुड़िया बहुत कॉस्टली है। एक पुड़िया कम से कम 2000-3000 की है अगर ये प्योर हीरोइन है तो। और लास्ट में जो ब्लू रंग का कैप्सूल है ये स्पाज्मोप्रोक्सीडोन है, और ये पेन किलर है। ये भी अफीम का डेरिवेटिव है, लेकिन आजकल ये बंद हो गया है। ये सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट हैं, अफीम और उसके ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव। अफीम और अफीम से बनने वाले मादक ड्रग्स। ये दूसरी कैटेगरी है जिसको डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इट्स ए एजेंट दैट रिड्यूसेस फंक्शनल एक्टिविटी एंड वाइटल एनर्जीज इन जनरल बाय प्रोड्यूसिंग मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड डायाफोरेसिस। फॉर एग्जांपल, बार्बिचुरेट्स का मतलब है दौरे की दवाइयां, बेंजोडाइजापीन नींद की दवाइयां, मेथक्विनोलोन ये भी नींद की दवाइयां, अल्कोहल और एथनॉल ये एक खास कैटेगरी है जो डिप्रेशन में आती है। तो बहुत सारे जो शराब पीने वाले लोग हैं वो शुरू में तो वो स्टिमुलेंट करती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए या दूसरे दिन देखे तो वो हैंग आउट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो ये खास कैटेगरी है जो डिप्रेशन पैदा करते हैं, जिसमें नींद की गोलियां, दौरे की गोलियां और अल्कोहल और उसके दूसरे जो ब्रांड है वो सारे के सारे इसी ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट, this is a third category which is known as stimulant. It's an agent that produces stimulations. इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि आप सोच नहीं सकते। और ज्यादातर जिन कंट्रीज में जैसे यूक्रेन में और रशिया का युद्ध हो रहा है या दूसरे कंट्रीज में पीछे लड़ाइयां हुई हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो उनके लोग हैं वो इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोकेन एक ड्रग है, क्रैक नाम से मार्केट में मिलती है, एम्फेटामिन ये भी ड्रग्स है। देन एक एमडीएमए के नाम से ड्रग्स है जो क्लब घर में इस्तेमाल हो जाती है, डांस बार में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी की सारी महंगे वो हैं। और स्टिमुलेंट्स जो है, कोकेन जो है, एक स्लाइड पीछे करेंगे आप, नहीं आगे करना, वो पत्ता कहाँ, यस यस यस, ये नहीं किसके, इनको बोलिए इसके आगे करना, यस यस। ये डॉक्टर जितने भी बैठे हुए ये देख लें कि ये हमारा, जैसे मैंने आपको ओपियम का बड दिखाया है, ओपियम का फूल दिखाया है, ये कोकेन का प्लांट है जो हमारे इंडिया में नहीं होता, ये नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में होता है और उसके आसपास के कंट्रीज में होता है, लेकिन बहुत महंगा है। ये भी एक पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इंजेक्शन भी लगाते हैं, स्नोट भी करते हैं लोग और स्निफ भी करते हैं। ये जो है ये सोने से 5 गुना महंगा है। सोना 3000 का 1 ग्राम है, तो ये पाउडर 1 ग्राम 15,000 रुपए का है। ये 15,000 का 1 ग्राम है, महंगा नशा है। बहुत हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो इसका नशा करते हैं। एक तो ये इंडिया में मिलता नहीं है क्योंकि इंपोर्टेड ड्रग्स है, लेकिन प्लांट बड़ा प्यारा है, फ्रूट बहुत प्यारा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया में इस तरीके के फ्रूट और प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन असल में कोकेन का कोका नाम से जो प्लांट है वो नहीं मिलता। आप होम्योपैथ को मैं बता दूं कि ये हमारे लिटरेचर में एक कोका नाम से दवाई है जो वॉइस को बड़ा क्लियर करती है, वो इसी प्लांट से बनने वाली दवाई है और बहुत सारे लोग हमारे डॉक्टर इसको इस्तेमाल भी करते होंगे शायद। नेक्स्ट प्लीज। चौथे तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, हेलुसिनोजेंस। इट इज एजेंट दैट इंड्यूसेस हेलुसिनोजेंस, मतलब भ्रम पैदा करते हैं, सेंस ऑफ
सेंस ऑफ परसेप्शन विदाउट ए सोर्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। LSD बहुत कम लोग नशा करते हैं। एक लाइसर्जिक डाइथैल एक एसिड है जिसको ड्रॉप में आपने मुंह में रखना है और नशा होता है। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है MDMA, जो स्टिमुलेंट भी है, हाफ इट्स पार्शियली स्टिमुलेंट एंड पार्शियली हेलुसिनोजेंस। ये बहुत महंगा नशा है। तीसरा मैजिक मशरूम है, ये कहीं कहीं मिलते हैं, ये कॉमनली नहीं मिलते और इंडिया में इसका नशा भी नहीं लोग ज्यादातर देखा नहीं कोई पेशेंट में ने। LSD का देखा है, MDMA का देखा है। भ्रम पैदा करने वाले ड्रग्स हैं ये। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे इंडिया की कॉमन ड्रग्स है जिसको हम कैनाबिस के नाम से जाना जाता है। हमारे लिटरेचर में कैनाबिस साइबा के नाम से एक मेडिसिन है और भांग इसका असली नाम हिंदी नाम है। इसमें भांग का भी लोग नशा करते हैं और हिंदुस्तान में भांग जो है वो लीगल है, लेकिन इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है जिसको हशीश का चर्स कहते हैं वो अलीगल है। हशीश ऑयल भी अलीगल है, टेट्राकेनोबिनाइल THC भी अलीगल है और मैरिजुआना जिसको हम गांजा कहते हैं, पॉट कहते हैं, रीटर कहते हैं, सुल्फा कहते हैं, ये सारे के सारे अलीगल है भांग को छोड़ के। लोग इसका भी नशा करते हैं और ये इंडिया में सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाला नशा है। ये देखो एक ब्यूटीफुल वो है प्लांट है जिसमें कैनाबिस का प्लांट है ये। इसमें अगर आप लीव्स गिनेंगे तो एक में 5 है, एक में कुछ पौधे में 10 होते हैं और जितने ज्यादा लीफ होंगे उतने ज्यादा वो इंटॉक्सिकेटेड होता है। तो 3 ड्रग्स हमारी प्लांट किंगडम से बनती हैं, बल्कि 4 ही बनती हैं, जिसमें एक कैनाबिस है, दूसरा ओपियम अफीम और अफीम से बनने वाले, तीसरा ये कोकेन। ये कैनाबिस का ही कल्टीवेटेड रूप है लेकिन दूसरी कंट्री का है। ये मॉडर्न फार्मिंग और कैनाबिस प्लांट कुछ दूसरे देश में, इसका भी लोग नशा करते हैं और बहुत बुरे तरीके से नशा करते हैं। कैनाबिस एक ऐसा प्लांट है जो एक ऐसी बीमारी पैदा करता है जो सिजोफ्रेनिया की तरह होती है। जैसे कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस है, जो लोग इसका नशा करते हैं वो पागलों की तरह हो जाते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। हमारे पास अक्सर 3-4 पेशेंट ऐसे हमेशा रहते हैं जिनको कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस हो गई है। आप देख रहे हैं स्लाइड? हाँ जी सर। ये बड़ा प्यारा रूप है। इससे पहले बैक, हाँ, ये जो कैनाबिस का ही पौधा है जिसका पिक्चर लिया हुआ है, इसमें 8 उसके लीव्स हैं, कुछ पौधों में 10 होते हैं। बहुत प्यारा लीव है, बहुत मतलब एक कुदरत की ऐसी स्ट्रक्चर है कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और ये नीचे जो पाउडर है ये गांजे का पाउडर है। इसी प्लांट का जो फ्लावरिंग पार्ट है उसको गांजा या मैरिजुआना कहते हैं। और ये जो हाथ में गोली बनाई हुई है ये हशीश है जिसको हम चर्स कहते हैं। तो चर्स का मतलब है ये जो ग्रीन लीव्स है इसको हाथों में रगड़ना होता है और जूसी मटेरियल को इकट्ठा करना है। जैसे कहना उसका ओपियम का मैंने बड बताया था जिसमें व्हाइट मिल्क की जूस था। इसमें जो ग्रीन जूस होगा हमारे हाथों पे जब हम रगड़ेंगे प्लांट को, लीव्स को रगड़ेंगे तो उसको हम कलेक्ट करके एक गोल वो बनाते हैं, ये हशीश होती है। तो एक इसका प्रोडक्ट है भांग जो हरे पत्ते में होता है, दूसरा मैरिजुआना और तीसरा ये हशीश। ये एक खास तरीके का स्मोक करने के लिए, मैरिजुआना को स्मोक करने के लिए एक पेपर आता है, विदेशी पेपर है जिसको OCB के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटी सी डब्बी है और इसमें करीब 30 एक शीट होती है, बड़ी पतली सी। तो पेपर जो बच्चे कहते हैं, जो छोटे बच्चे हैं सड़कों पे या 6-8-9 साल के बच्चे हैं या जो क्राइम में इन्वॉल्व बच्चे हैं, वो जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो पेपर में पीता हूँ। जब हम उनसे पूछते हैं आप नशा कैसे करते हो, गांजे का नशा करते हैं, कैसे पीते हैं, कोई कहता है मैं चिलम में कहता हूँ, कोई कहता है मैं सिगरेट में पीता हूँ, कोई कहता है मैं बीड़ी में पीता हूँ, एक बच्चा कहता है मैं OCB में पीता हूँ। वो OCB क्या है ये समझने की बात है, खास तरीके का पेपर है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो पेपर क्या है, कैसे उसको रोल करते हैं, कैसे उसको स्मोक करते हैं। तो बीइंग ए डॉक्टर हमें ये बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। अब बच्चा, मेरा पेशेंट कह रहा है कि मैं OCB में पीता हूं, तो मुझे यही नहीं समझ आएगा कि OCB क्या है। जब हमें बेसिक जानकारी होगी तभी हम कह पाएंगे कि हाँ OCB एक पेपर है जिसको आप 3 रुपए का खरीदते हो, 5 रुपए का खरीदते हो, तो वो कहेगा हाँ जी हाँ जी। तो उसको हम जब हम उससे पूछेंगे कंपैरिजनली कि आप चिलम में क्यों नहीं पीते, पेपर में क्यों पीते, तो वो उसके वो बेनिफिट्स बताएगा। बीड़ी में क्यों नहीं पीते तो बेनिफिट्स बताएगा।
बहुत सारे बच्चे हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं कि ओसीबी में क्यों पीते हैं, चिल में क्यों नहीं पीते, ओसीबी में क्यों पीता हूं, इस तरीके से। नेक्स्ट प्लीज। ये 6th कैटेगरी है जो आज की डेट में बंद हो चुकी है। इसमें भी ये पेट्रोल थिनर, फ्लूइड जिसको वाइटनर की ये 2 शीशियां आपको नजर आ रही हैं, और ठीक उसी तरीके की हैं ये नीचे शीशियां जिसपे इरेज एक्स लिखा है, लाल रेड पैक, ये क्या कहते हैं, पिंकिश कलर का, येलो कलर का ये पैकेट है जिसमें 2 शीशियां होती हैं, एक में डिल्यूटर होता है, एक में फ्लूइड होता है। ये अब बंद हो चुके हैं 3 साल से। लोग बच्चे इसका नशा करते थे। ये एक सेट 50 रुपए का आता था। अब उसकी जगह पे दे हैव शिफ्टेड टू दिस, ये तीसरे नंबर की जो साइकिल पंचर ट्यूब है उसका नशा कर लेते हैं, आयोडेक्स का नशा कर लेते हैं, और एक जो फेविकोल है उसका नशा कर लेते हैं, फेविकोल की एक ट्यूब आती है उसका नशा कर लेते हैं। दिस इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द यंग चिल्ड्रन, स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये विदेशी है जो साउथ अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। खाता, इसका नाम है खाता और मीरा। इसका भी लोग नशा करते हैं। इंडिया में मैंने नहीं देखा कोई पेशेंट। ये केटामीन है जिसका लोग नशा करते हैं, और खास करके जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर है शायद वो ही नशा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितनी डोज लेनी है। अगर हमारे जैसा दूसरा कोई नशेबाज इसको ले लेता है तो फिर शायद उसको होश आए ना आए, वो डिपेंड करना। तो इट्स ए वेरी टेक्निकल ड्रग्स एंड ओनली पीपल हु आर स्किल्ड इन एनेस्थीसिया रूम दे टेक्स दिस ड्रग्स। मैंने पिछले 32 सालों में करीब 1-2 नशेबाजी ही देखे हैं जो डॉक्टर थे। ये रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हम डॉक्टरों के लिए, खास करके हम जिस सिस्टम के डॉक्टर हैं, क्योंकि एक ड्रग्स 4 रूट से ली जाती है। जैसे ये गोली है तो गोली तो हमेशा ऑरल रूट से ली जाएगी। स्मोकिंग, इसमें 3-4 नशे हैं, जैसे कैनाबिस को आप स्मोक करते हो, मैरिजुआना को स्मोक करते हो, कुछ लोग हशीश को भी स्मोक करते हैं। फिर इंजेक्शन है, कौन सा नशा हमने इंजेक्शन के जरिए लेना है। तो जब हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं तो ये रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ड्रग ले रहे हो, कितनी डोज लेते हो, और खास करके कुछ ड्रग्स बहुत कम मात्रा में ली जाती हैं। इसलिए हमारा जो बीइंग ए होम्योपैथिक फिजिशियन, वी शुड हैव एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द डोज ऑफ ड्रग, जिसमें हम इसकी मात्रा की डोज कर सकते हैं। जिसमें कोकेन है, जिसमें हीरोइन है, बहुत कम मात्रा में ली जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। और दूसरा, उसकी पहचान कैसे करनी है, तो कौन से रूट में पेशेंट ले रहा है। एक ड्रग्स को 4 रूट में लेता है। जैसे ये लड़की नीचे चेजिंग इसको कहते हैं, चेजिंग, इसको हम इसी ड्रग्स को हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं, इसी ड्रग को हम स्निफ भी कर सकते हैं। 3-4 रूट से हो जाती है। और ये लास्ट वाला जो तरीका है वो हफिंग है। तो ये ज्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, सड़कों के बच्चे हैं या छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो फेविकोल को या साइकिल पंचर रिपेयर ट्यूब को या शूज रिपेयर ट्यूब को वो एक पॉलीथीन में डालते हैं और उनको मुंह से इनहेल करते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज हफिंग। द पेशेंट इज नॉट इनहेलिंग थ्रू नोज। कुछ को इनहेल करते हैं, कुछ को हफिंग करते हैं, कुछ को स्निफिंग करते हैं। ये जो स्निफ करने वाला ड्रग्स है ये महंगा वाला है, जिसको हम कोकेन कहते हैं। नेक्स्ट। अब हम अपने हिंदुस्तान की बात कर लें तो ये मिनिस्ट्री ने एक सर्वे किया था, और इसका मतलब है हमारे हिंदुस्तान में इस बीमारी का बर्डन कितना है। अगर हमने ड्रग डिपेंडेंस या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को बीमारी कहा है, तो इस बीमारी के कितने लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में इस समय हैं। एस्टिमेट की बात करें तो 23 करोड़ लोग हैं जो इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नशा करते हैं, जिसमें अल्कोहल अलग है, कैनाबिस अलग है, ओपिएट है, हीरोइन है और इलेहेंट है। ये 5 तरीके की ड्रग्स है। टोटल क्लासिफिकेशन में मैंने 9 तरीके बताए हैं, लेकिन 3-4 तरीकों की ड्रग्स इंडिया में कम मिलती है, इसलिए वो उसका सर्वे में नामो निशान कम है, होगा कहीं मेंशन किया होगा। और इसी 23 करोड़ 38 लाख की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इलाज की, जो डिपेंडेंट हैं, वो 7 करोड़ 87 लाख है। शराब की बात करते हैं 5 करोड़ 7 लाख, कैनाबिस की बात करते हैं 72 लाख,
ओपिएट्स 60 लाख, हीरोइन 63 लाख और इनहेलेंट 22 लाख। कुल मिला के 7 करोड़ 87 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इलाज की जरूरत है। और ये सर्वे 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्स ने किया है। जब ये सर्वे, वी आर द पार्ट ऑफ दिस सर्वे इन दिल्ली। जब ये सर्वे हुआ और जब इसकी फाइंडिंग हुई तो देयर वाज डिसेमिनेशन ऑफ सर्वे फाइंडिंग, उसमें भी मैं गया और मैंने पार्टिसिपेट किया। तो डॉक्टर से मैंने पूछा ये 7 करोड़ 87 लाख लोगों को ठीक करने के लिए कितना टाइम चाहिए? जो जवाब था वो बड़ा मुश्किल था। 7 करोड़ 87 लाख लोगों को साल में इनमें से 3,30,000 लोगों को इलाज मिलता है। तो आप बाकी सोचो 7 करोड़ 50 लाख लोगों को इलाज नहीं मिलता हिंदुस्तान में, कैसे करेंगे? तो हम जैसे जो डॉक्टर हैं, अगर हम जैसे डॉक्टर आगे लोगों को ट्रेंड करें तो कम से कम प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं, रोकथाम पे काम कर सकते हैं और इलाज पे भी काम कर सकते हैं। इसमें जो 2 कैटेगरी है, इनहेलेंट के पे लिए अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है तो वी आर वेरी गुड ट्रेंड होम्योपैथ। जो भी दवाई आपको नजर आती है, जो सिम्टोमेटिक आपको नजर आती है, उस बच्चे को दो। लेकिन मुश्किल ये है कि इनके लिए हमें रिहैब सेंटर में भर्ती करके अगर दवाई दें तो ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें हम सुपरविजन कर सकते हैं। तो बी एज ए होम्योपैथ कहीं प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं, कहीं ट्रेनिंग पे काम कर सकते हैं, कहीं ट्रीटमेंट पे काम कर सकते हैं। एंड वी हैव वेरी गुड ऑप्शंस, वी हैव वेरी गुड स्कोप। अगर 7 करोड़ 50 लाख लोगों को दवाई नहीं मिल रही, इलाज नहीं मिल रहा, तो क्या हम उनका इलाज नहीं कर सकते? क्या हम एज ए काउंसलर उनको समझा नहीं सकते? क्या हम एज ए गाइड उनको रास्ता नहीं दिखा सकते कि कहाँ इलाज होता है, कहाँ नहीं हो सकता? क्या हम एज ए होम्योपैथ उनको दवाई नहीं दे सकते जो जहां पे हम देना चाहें? तो वी हैव वेरी गुड स्कोप, ओनली वी डोंट हैव द विल पावर। हमारे अंदर एक कमिटमेंट नहीं है। अगर कमिटमेंट होगा, विल पावर होगी तो वी कैन डू। 32 साल पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार क्या करेंगे। और जिन डॉक्टरों ने, होम्योपैथ ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने यही कहा था कि होम्योपैथी तो काम नहीं करती, फिर तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे? मैंने कहा जो तुम काम कर रहे हो वही मैं कर लूंगा। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि जिन डॉक्टरों ने ऐसा कहा था वो तो अब फील्ड में काम नहीं करते, लेकिन वो मेरे पास ही पेशेंट भेजते हैं, भाई इसको देख लो, इनको गाइड कर दो, इनको इलाज कर दो, इनको दाखिल कर लो। तो स्कोप तो हमने खुद बनाना, जैसे आप हमारे बहुत सारे डॉक्टरों ने बनाया हुआ है। ये 3 तरीके के प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में चलाए जाते हैं किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। खास करके बीमारियों की बात है, जब कोई दूसरी समस्या है तब भी हम इस तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं। एक है सप्लाई रिडक्शन, दूसरा डिमांड रिडक्शन, तीसरा है हार्म रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन का मतलब जो हमारे कंट्रोल करने वाली मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जिसमें एनसीवी है, जो आप लोगों को भी अभी शाहरुख खान के केस में पता चला, दिल्ली में हेडक्वार्टर है लेकिन हर स्टेट में होता है। ये कंट्रोल करने वाली एजेंसियां हैं। दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मतलब जहां हमारे 3 स्टेटों में लाइसेंसिंग खेती की जाती है अफीम की, उनको वो कंट्रोल करते हैं। डिमांड रिडक्शन का मतलब आप सारे और मैं भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के 110 हॉस्पिटल है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के 450 एनजीओ हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम है। आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। डिमांड रिडक्शन का मतलब है आपने एजुकेट करना है पब्लिक को, पेशेंट को एजुकेट करना है, कम्युनिटी को एजुकेट करना है, स्कूल एंड कॉलेज में जाके लोगों बच्चों को कम्युनिटी एजुकेट करना है, और जो आप इलाज दे सकते हो वो। तो जो इलाज कर रहे हैं वो भी डिमांड रिडक्शन में, जो एजुकेट कर रहे हैं वो भी डिमांड रिडक्शन में। हार्म रिडक्शन एक तीसरे तरीके का तरीका है। जिन्होंने ये देखा कि डिमांड रिडक्शन फेल हो गया है, वो हम हार्म रिडक्शन की वो ये मेथड अपनाते हैं, जिसमें हम एक HIV एड्स के लिए खास प्रोग्राम है, नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम। जो लोग सुइयों से नशा करते हैं उसको हम सुइयां देते हैं कि वो शेयरिंग वाली सुई ना ले। दूसरा है ऑरल सब्स्टिट्यूट थेरेपी। एक ऐसा आपने जैसे जो मेथाडोन है,
या बुप्रीनॉर्फिन है, अफीम और ओपियम डेरिवेटिव के लोग जो नशा करते हैं उनको रोकने के लिए आपने एक मेडिसिन बनाई है जो आपने खाने के रूप में देनी है और कई सालों तक देनी है। देन शूटिंग गैलरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग नशा करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी, जैसे सिरिंज की अवेलेबिलिटी मिलेगी, कॉटन मिलेगा आपको, बैंडेज मिलेगा आपको, सेवलॉन मिलेगा आपको, और कॉफी की शॉप होगी, नर्स होगी वहां पे, देन एम्बुलेंस होगा, अगर कोई नशेबाज को किसी ओवरडोज हो गई है तो दैट कैन बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो शूटिंग गैलरी इंडिया में तो नहीं है लेकिन विदेशों में है, जैसे थाईलैंड में आई हैव सीन दिस गैलरी, बट इट्स अगेन ऐसा एक जगह देनी है जिसमें लोगों को नशा करने का मौका मिले। जैसे एयरपोर्ट पे स्मोकिंग जोन होती है उसी तरीके से ये शूटिंग गैलरी होती है जो लोग सुइयों से नशा करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिसमें हम सैंडविच बने हुए हैं, 3 कंट्री एक तरफ है, 3 कंट्री एक तरफ है। एक गोल्डन क्रीसेंट के नाम से जाना जाता है। जब हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आता है। अफगान दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफीम और दूसरे अफीम के प्रोडक्ट को, तो वो जब वो दूसरे कंट्री में बेचता है तो हिंदुस्तान के थ्रू बेचता है, हिंदुस्तान में उसका कंजप्शन भी होता है, ट्रांजिट पॉइंट भी है। तो गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जो दूसरा हमारा वो ट्रायंगल बनता है वो राइट साइड में बनता है, जिसमें थाईलैंड है, बर्मा है और लाओस है। इंडिया इनके बीच में है। ड्रग्स अफगानिस्तान से आई या ईरान से आई या पाकिस्तान से आई, और ज्यादातर ये तीनों देशों से होते हुए इंडिया में आती है। इंडिया में इसका ट्रांजिट पॉइंट है तो लोग इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं और इसके बाद दूसरे देशों में बेचते हैं। तो ना चाहते हुए भी हम सैंडविच बने हुए हैं। नेक्स्ट, ये एक बड़ी सुंदर, इसको मैंने मैप के तरीके से दिखाया गया है, तो जो लोग इसको समझना चाहें वो समझे। एक गोल्डन ट्रायंगल और एक गोल्डन क्रीसेंट है और इंडिया बीच में है, तो इंडिया को ना चाहते हुए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, तो बेलारूस भी बेचारा साथ में लिपटा हुआ है क्योंकि बॉर्डर वाला इलाका है। नेक्स्ट, कारण की बात करते हैं। डॉक्टर, मुझे लगता है मेरी स्लाइड जो है 5-7 मिनट और है। डॉक्टर नीरज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 5-7 मिनट और रुकें। क्यों लोग नशा करते हैं? ये 3 बहुत बड़ा जो कारण है वो तो ड्रग्स ही है, नशा ही है, लेकिन ये ट्रायंगल है जो हमेशा चाहिए। ड्रग्स चाहिए, वो आदमी चाहिए और रीजन चाहिए। रीजन का मतलब इच्छा चाहिए नशा करने की। अगर पीछे ये ड्रग्स, हम जितने भी होम्योपैथ बैठे हुए हैं, अगर ये ट्रायंगल हम सबको भी मिल जाए तो हो सकता है हम ना करें, क्योंकि इच्छा नहीं है हमें नशा करने की। अगर रीजन नहीं है तो ड्रग्स बेकार है, लेकिन उनके लिए जो नशेबाज बनते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो द इटियोलॉजी इज ड्रग्स, और उसके जो कारण है, उसके सहायक कारण है, वो आगे हैं। नेक्स्ट, इनको मैंने कैटेगराइज किया है। कुछ मेडिकल कारण है, कुछ इन्वायरमेंटल का कारण है, कुछ फैमिली कारण है, कुछ सोशल कारण है। मेडिकल में क्यूरियोसिटी, इट्स अ मेंटल लेवल कॉजेस। बहुत जबरदस्त इच्छा है कि यार साथ वाला ऐसा करता है तो मैं भी करके देखूं। कहानियां सुनाते हैं कुछ लोग, बच्चे फिल्म देखते हैं कि उस फिल्म में उसने ऐसा किया तो मैं भी करके देखता हूं। तो क्यूरियोसिटी is the strong associated factor for euphoric feeling. यूफोरिक फीलिंग, अगर हम सब में से कल किसी ने कपिल की कॉमेडी सुनी होगी, तो वहां एक बैंड आया था, उस बैंड का नाम था यूफोरिया, और बैंड का जो बैंड का मालिक था वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर पलाश सेन। वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो उसने, कपिल ने पूछा, भाई तूने यूफोरिया क्यों रखा है इसको? यूफोरिया बैंड है सर। क्यों रखा? He is a doctor, he knows कि it's a pre-state of mania. वो कहता है कि मैं डॉक्टरी बैकग्राउंड से हूं और मेरी 30 पीढ़ियां डॉक्टर की है,
तो अगर मैं डॉक्टरी भाषा में रखेंगे तो कह रहा कहीं डायरिया आएगा, कहीं एक और टर्म ली थी तो इसलिए मैंने कहा यार डायरिया क्या होता है, ये क्या होता है, तो मैंने इफोरिया रखा। इफोरिया का जो हिंदी मतलब है वो है कि ऐसी अद्भुत खुशी। नशेबाजों को एक ऐसी खुशी मिलती है जो दूसरी दुनिया में नहीं मिलती, दूसरी चीज से नहीं मिलती। और नशेबाज कहते हैं कि सर नशा करने से हम एक जन्नत में आ जाते हैं, बहुत हाई फीलिंग होती है खुशी की। ये टू कम आउट ऑफ फ्रॉम लोनलीनेस, सफोकेशन, गिल्ट, वरीज, ये सारे के सारे दिमागी तौर के वो है मेडिकल से वो फैक्टर है, उनकी वजह से लोग नशा करते हैं। अदर मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड क्रेविंग। मेडिकल में ही जो नॉन मेंटल है वो है सर्जरी, पेन, सर्जरी की पेन होगी, सिजेरियन पेन होगी, कैंसर की पेन बहुत दर्द होती है। इसलिए कैंसर के लिए अभी कैनाबिस से डॉक्टरों ने एक दवाई बनाई है जो कैंसर के पेशेंट को दी जाएगी। कई सालों से इसकी लड़ाई चल रही थी कि कैनाबिस जो है नशा पैदा करती है, लेकिन कैनाबिस में पेन रिलीफ के भी कुछ वो है कंपाउंड हैं। तो कैंसर वालों लोगों के अगर वो ऐसी दवाइयां खाएंगे तो हो सकता है वो एडिक्ट बन जाए। रोड ट्रेवलिंग एक्सीडेंट में जो पेन होती है उसके लिए ये दवाई खाते हैं और नशे का शिकार बनते हैं। पथरी की दर्द के लिए कुछ लोग पेन किलर खाते थे, उसका शिकार बने। और हमने ये सारे के सारे ये कारण हमने अपने रिहैब सेंटर में देखे हैं। किसी ने कहा जी मेरा ऑपरेशन हुआ इसलिए मैंने पेन किलर खाना शुरू किया। सिजेरियन को छोड़ के कैंसर वाला भी नहीं देखा हमने। रोड ट्रेवलिंग एक्सीडेंट के देखे 2-3 पेशेंट, रीनल स्टोन के देखे हमने, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर। 40% नशेबाज जो हैं वो किसी ना किसी बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। तो ये सारे देखें। इफोरिक फीलिंग में तो वो जब हम डिस्कस करते हैं, पेशेंट से बातचीत करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो वो अपनी अलग वो क्या कहते हैं थीसिस बताता है कि ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने पीटीएसडी की वजह से दवाइयां ये नशा शुरू किया। कुछ लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो नशा कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता और वो ठीक भी बड़ा मुश्किल से होते हैं। कुछ लोग हैं जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की वजह से नशा करते हैं, जैसे जिम में जाने वाले लोग हैं, आस्ता आस्ता वो अगर कहीं एनाबोलिक स्टीरॉयड खाते हैं फिर दूसरा भी नशा करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं स्टीरॉयड्स में भी नशा है। नेक्स्ट। सोशल और फैमिली की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है पीयर प्रेशर। अगर हम 4 लोग बैठ के नशा कर रहे हैं, 5वां अगर उसमें नशा नहीं कर रहा तो एक दिन ऐसा आएगा या तो 5वां हमारे ग्रुप को छोड़ देगा, नहीं तो वो नशा करेगा। तो जब भी हमने इंटरव्यू किया है, मोर देन 90% पीपल से कि संगत की वजह से, संगत, पीयर प्रेशर, बीइंग सोशल, समाज को दिखाने के लिए कहीं पार्टी में चले गए, कहीं फंक्शन में चले गए, वहां लगा कि मैं अकेला बैठा हुआ हूं तो लोगों ने कहा आजा भाई इधर आ, हमारे लिए चलो चेयर करते हैं। टू फेस पेरेंट प्रेशर, बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने पेरेंट्स, आज का पेरेंटल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से परेशान हो गए हैं बच्चे। एक पेरेंट से ये कहता है, दूसरा ये कहता है, रिश्तेदार कहता है, क्या करें, स्कूल टीचर की कुछ और एक्सपेक्टेशन है। देन सेलिब्रेशंस, ये तो आप सबको भी पता होगा, कोई शादी ऐसी नहीं जाती, कोई न्यू ईयर पार्टी ऐसी नहीं जाती, कोई बर्थडे पार्टी, कोई रेव पार्टी तो बेसिकली बनी इसलिए। लार्ज गैदरिंग, म्यूजिकल कंसर्ट, स्पोर्ट्स अरीनास। स्पोर्ट्स अरीना में दिल्ली एक बड़ी बात का गवाह है, शायद डॉक्टर अनुपम, क्योंकि हमारे टाइम के हैं डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर नीरज भी हमारे टाइम के हैं। एशियन 82 हुए थे, एशियन 82 गेम्स हुए थे, तो उस समय स्मैक जिसको हम हीरोइन कह रहे हैं, जो फ्री में बांटी थी पहाड़गंज। और उनके जाने के बाद उन्होंने अपने पेडलर छोड़ दिए, कहाँ मिलती है, कितने में मिलती है। तो ये गेम जब भी जहां कहीं भी जाती हैं, चाहे वो फुटबॉल की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वो दूसरा कोई कुंभ हो जिसमें बड़ा इवेंट हो, इसमें ये लोग साथ जाते हैं और उनके लिए बहुत बड़े लेवल का बिजनेस होता है।
तो हम जो दिल्ली में रहने वाले हैं, एशियन 82 में आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई लिव इन पहाड़गंज, जहाँ पे बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे, टूरिस्ट ठहरे हुए थे जिन्होंने ये सब किया, और आस्ता आस्ता लोग नशेबाज करना शुरू किए। उससे पहले भी इसका नशा करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उससे पहले जो लोग नशा करते थे लेकिन वो बड़े हाई फाई लोग होते थे, बड़े अमीर लोग होते थे। उसके बाद 82 के बाद ये सारा इन्वायरमेंटल में जहाँ नशा मिलता है, हिल स्टेट्स में जहाँ पे ये कैनबिस मिलती है, हर जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उसमें लोग खूब नशा करते हैं, और वो अपनी, उन्होंने कहा हुआ दिस इज ए इंटरटेनमेंट ड्रग ऑफ एंटरटेनमेंट, उसके लिए कोई वहां कानून कायदा नहीं चलता। और जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है वहां भी कुछ आसपास के लोग नशा करते हैं। सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम हमने बहुत सारा देखा कि जो अकेला बच्चा था, लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ गया और नशा करना शुरू हो गया। हर बैच में, हमारे 15 बेड का नशा मुक्ति केंद्र है, हर बैच में 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम होते हैं। अकेला बच्चा था, लाड प्यार ज्यादा दिया गया और नशेबाज बन गया। एडिक्शन इन फैमिली की वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल जो होली और शिवरात्रि है, मुझे लगता है हम जो डॉक्टर बैठे हुए हैं सब ने अभी शिवरात्रि पे भांग खूब चढ़ाई होगी, खाई नहीं होगी तो अलग बात है, वो होली पे खा लेंगे, लेकिन हम भी कुछ धार्मिकता की वजह से कुछ लोग नशा कर ही लेते हैं। ये हमारा रिहैब सेंटर है जिसमें हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, पूरे दिन का शेड्यूल होता है, काउंसलिंग भी है, योगा भी है, दवाइयां भी हैं। तो इलाज के बारे में मेरे दोस्त डॉक्टर नीरज गुप्ता जी बताएंगे। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है, पर डॉक्टर अनुपम आपको भी देखना पड़ेगा, शुरू में आपने टाइम लिया था हमारा, तो अब क्या करें। इट्स सो इंटरेस्टिंग सर, आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एवरीबॉडी इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन इट, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपके साथ एक सेशन अभी और ड्यू है, अभी अब एक पहला सेशन हुआ है, अगला महीने भी आपके साथ ही ड्यू है, विल कंटिन्यू विद यू। हाँ, जो सेकंड सेशन है उसमें मैं इसमें इसके सिम्टम बताऊंगा, इसमें क्या टेस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर नीरज आज बता देंगे इलाज क्या है, कुछ मैं बता दूंगा रिजल्ट क्या है, लाइक दैट। तो ओवर टू, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत पेशेंस से सुना है, आवाज भी नहीं आई, किसी ने सवाल भी नहीं पूछा, बड़ा अच्छा लगा। सर सवाल बहुत आ रहे हैं, सब चैट में आ रहे हैं, आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने सबको म्यूट कर रखा था और हमने वीडियोस भी सबके ऑफ कर रखे थे ताकि आपको बोलने में डिस्टरबेंस ना हो, तो सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं मैडम आप लोगों को कंट्रोल करना बहुत अच्छा जानते हो। तो जर्रा नवाजी आपकी सर, जर्रा नवाजी आपकी। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओवर टू डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर पारुल, आप प्लीज डॉक्टर नीरज को इंट्रोड्यूस कराएंगे होपफुली। अच्छा, इस बार अच्छा हुआ कि आपका खराब नहीं हुआ ऑडियो। Very sorry for that. Good evening, sir. Dr. Neeraj Gupta, sir, good evening. It is such an honor for us to have you today between us. Presently, Dr. Gupta is a professor and PG Guide, Department of Organon Medicine, and DMS, Deputy Medical Superintendent of NHMC Hospital, Defense Colony, New Delhi. Ma'am, I can't see. इसको स्टॉप कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है? मैम स्टॉप स्क्रीन का साइन आ रहा होगा ऊपर आपकी विंडो पे, ऊपर एक जगह आ रहा होगा स्टॉप शेयर, प्लीज क्लिक दैट। हो गया। हाँ जी, डॉक्टर पारुल प्लीज डॉक्टर नीरज को इंट्रोड्यूस कराएं। Sure. Good evening, Dr. Neeraj Gupta, sir. It's such an honor for us to have you today between us. Presently, Dr. Neeraj Gupta is a professor and PG Guide, Department of Organon of Medicine, and Deputy Medical Superintendent of Nehru Homeopathic Medical College and Hospital, Defense Colony, New Delhi. Formerly visiting homeopathic doctor at Navjyoti Clinics under Delhi Police Foundation, North Delhi during 1988 to 1990. Formerly lecturer at Dr. B.R. Sood Homeopathic Medical College, Moti Bagh, New Delhi from 1990 to 1996. Ex-medical officer in SSB, Special Security Bureau, Shimla, 1997 to 2001. Welcome, sir.
Good evening, everyone. I thank BIH to have invited me to speak and share my experiences with drug addicts. I think we have exceeded the time limit because I was given that 6:30 to 8 we shall be there. And I think my topic is not going to be over in another 45 minutes or so. Sir, If- please continue. Now, Please continue. if it can be postponed for the next session. No, sir, please continue. We are listening. No. You are listening, but I have scheduled my evenings according to that Okay. because I was given 6:30 to 8. Sir, वो lecture इतना interesting होगा. No, that is true. That is true. Continue. Dr. Bharat Bhushan has very well managed and very well spoken. Everything he has covered. But the point is that I can simply share with some cases, seeing the time limit, because I was trying to incorporate the approach, which cannot be finished in another 40 minutes or so. सर आप जितना बोल सके उतना बोल दीजिए. जितना आपके पास टाइम है उतना आपको रिक्वेस्ट करूंगी. Okay, let me see how we can go ahead. Yeah. Is the screen visible? Yes sir, पर full screen कर लीजिए please. Yeah. आपके आइकॉन्स दिख रहे हैं, full screen कर लीजिए. Yes. Is it visible now? Yes sir. Okay. A minute. So the topic of today is drug addiction and homeopathy. Well, how can we go ahead? Next slide. Okay, just a minute. So it has already been spoken. What is drug addiction? In short, we know that drug addiction or any drug which we are consuming or anybody is consuming is characterized by compulsive drug seeking behavior. Its use even in the face of negative health and consequences. The drug addict does not want to know what will be the consequences. Even if it is going to take his life, he is not bothered because he is compelled to consume the drug, whether it is alcohol, cocaine, hashish, charas, ganja, or even smack, whatever drugs. Now, drugs, what I would like to tell you, I have just given the mnemonic. D stands for disaster, darkness, and death. The patient regrets, there is a repentance, and it is a risky behavior. You for unfriendly, he becomes unfriendly, he goes into his cocoon, in his shell. He does not, the drug addict would not like to go in the company other than the drug addicts itself. So the social network which he was having earlier, he no longer maintains that. He becomes unkind. He's not kind enough to his family, to his friends, and many people. And he's unkempt. Unkempt means he's not clean, just like sulfur. His clothes, his behavior, his grooming, if you can see, you can very well say yes, he can be a drug addict. G stands for grave. The drugs, when started as a occasional choice, and that at that time there's nothing, but once the drug addict becomes so much into it that he cannot live without it, it has to take him to grave. Death is the final answer, and there are groans and grief in the family. We have seen so many families grieving for the death of addict, of their brother, their son, maybe many people. And S stands for stress. It is stressful, not only for the drug addict, but for the whole family. It gives a shock, and it's just like wild savage. How it happens and how does it happen? Very well, we understand that first acquaintance with the drug, usually a soft one. The person starts with a cigarette, maybe, and then the acquaintance becomes casual, episodic, or sporadic, and then there is an infrequent misuse, which leads to tolerance. The person becomes tolerant to that, leading to
Sorry. Physical dependence and psychological dependence. Both the person, the drug addict, become dependent on the drug, and he continues the use of drugs. Increasingly repeated doses. There are withdrawal symptoms if abstinence is attempted. If he is not taking the drug, there would be withdrawal phase. And in that withdrawal phase, many symptoms are observed. Pains, body pains, fever, cough, restlessness, anxiety, sleeplessness. These are very common symptoms which we found during the withdrawal phase. Luckily, I got a chance during my internship to work on a project of drug addiction and homeopathy, and I was posted by our principal to Navjyoti Clinic. There was our senior, Dr. J.P.S. Bakshi, Dr. Bharat also named him. And we joined there, and we happened to see various Navjyoti clinics, which was under Delhi Police Foundation, which was started by the then DCP, Mrs. Kiran Bedi, everybody knows. And Amod Kant Saab, he was the Joint Commissioner at that time for Narcotics Control Bureau. And there were so many people involved in this management. Drugs, if taken casually and indulgence is maintained, it affects the personality and causes social difficulties. Then it leads to drug morbidity. Drug morbidity means there can be some pathological features which may erupt, and the medication starts and it may lead to cure either, or there can be relapse. Relapse leads to deterioration. If many patients, many addicts go on relapsing, they keep trying the cure, but it is not possible. It leads to deterioration and final death. On the other hand, there is a deterioration of the character. The personality changes. The total person is altogether changed. It may be leading to neurotic personality or latent psychosis. Many patients, we have seen that going into delusional phases, hallucinational phases, just like that of schizophrenia, Dr. Bharat has just mentioned in one of his slides. Classification already has been dealt. I need not go into that. Common drugs of abuse, we have already seen: opium, morphine, heroin. They're all derivatives of opium. Cocaine, marijuana, barbiturates, hallucinogens, and alcohol. So far as alcohol is concerned, बात आती है अल्कोहल की, शराब की, तो मुझे याद आता है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल. तो लोगों ने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं, और पंकज उदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, दूसरा शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए. तो people who are consuming alcohol, they are just like that. And these causes already of the modern society already has been discussed out: curiosity, defective personality, enjoyment of induced euphoria, excitement, parental deprivation. We have seen that where the families, the parents have moved away, or they have been separated legally or non-legally, the children don't have a shelter. So they may go to the extreme extent of trying these drugs or other forms of societal disintegration, alienation, broken homes, family having conflicts, prolonged use of addictive drugs like morphine as pain reliever. In cancer, the first choice of drug for pain relieving is morphine. Morphine patches are available, many of us know. So this morphine as a pain reliever becomes an addiction in the long term. Peer group influence has already been talked about. Exposure to institutions having monotonous, dull jobs with bad management and unemployment. Many people may tell us, कि sir, हमारे यहाँ कोई promotions नहीं होती हैं, and the job which I am doing is very dull. There is no enthusiasm left for working, and our managers are really bad. They are promoting the juniors, and we are being left without promotions. So this can be a reason for going to soft drugs initially, and then it becomes casual and episodic, sporadic, and then it leads to many times addiction. The person goes into the phase of addiction.
And it is a way to get societal acceptance, especially for socially inadequate individuals, persons with lack of confidence, those who do not have confidence much in their, you know, individuality. So to gain that confidence, they may try some drug, they may go to take some alcohol or morphine, and they may go to any extent doing anything. Many of the athletes, you may be knowing that they were taking some drugs, anabolic steroids, to enhance their physical stamina. And not only that, but many people, many addicts, many people, especially not addicts, but they are not adequate so far as their performance is concerned. To enhance the performance, they may go to take these kind of drugs. Like we have come across anesthetists who were taking some drugs, like it was told by Dr. Bharat Bhushan, some drugs were there. Ketamine. Ketamine is a very common drug which is abused by people who want to enhance their performance. Yeah. Attempts at self-treatment. Many people try to treat themselves. There is a myth that it increases sexual capacity. For premature ejaculation or impotency, people may feel that yes, somebody tells them कि भाई इससे आपकी performance enhance होगी, so they may try and they may find that yes, it can help, but actually it is a myth. It is not like that. The people cannot be without drug for any kind of sexual activity later on. They become so much dependent that they cannot perform. Many times they become, earlier it was a psychogenic impotency, and later on it becomes an organic impotency. So much so, deterioration may happen. People who are into drug trafficking, its promotion by peddlers, pushers with vast resources, they may be promoting the drug addiction or drugs of abuse. And it is a very common overcoming boredom. If you are getting bored, chalo yaar, aaj 4 dost milte hain, we will have a peg, leg with peg. So that's a very common phenomenon, and it starts like that only. Exposure to jobs involving drugs like driving, bars, restaurants, etc., where this is freely available. And many times to enhance creative ability or sharpen perception by the use of drugs like amphetamines or LSD, lysergic diethylamide, that has already been discussed out. Now, when I was working with Navjyoti Clinic, so we happened to study we did a small study of 100 cases which were treated by homeopathy. And the cases were classified into mild category. At that point of time, the smack was very much commonly available, which is called as brown sugar also. And mild cases, those who were taking smack or brown sugar or drug from 6 to 8 months, it can be any drug, alcohol. So people who are taking 6 to 8 months, 1/4 to ½ gram per day. That was about brown sugar I'm talking of, smack. Moderate cases taking drugs from 8 months to 2 years, ½ to 2 grams per day. And severe cases taking drugs for more than 2 years, 2 to 5 grams per day. At that point of time, when we were working there, 1 gram used to cost about 500 to 800 rupees. At that time, I'm talking of way back in 1988, 89. So this was the thing. The approach which we took for treatment, out of 100 cases, we divided 50 cases were treated on the mental basis, on the basis of mental symptoms. 25 cases were treated based on totality, and 25 rest cases were treated on the basis of characteristic symptoms. So this was the approach we took. At that point of time, we were learners, and we were just trying to learn how homeopathy can help these drug addiction cases. And this is the data which we could get, which proved about the effectiveness. Mild cases, 80 to 90% homeopathic treatment was effective. Moderate cases, 60 to 80%, and severe cases, 30 to 40% only. Now, this is the approach which we used for handling the drug addiction. Cases dealt on mental basis, because it is a problem or a disease caused due to stress, despair, loneliness. We have discussed out so many factors: frustration, conflict, tension, disappointments. And these causes becomes either the exciting or maintaining causes, or factors. The mental state of the patient become important to know. We must have to know about the mental state of the patient.
And we need to know about the exciting factors, exciting causes, prima causa morbi. That is the exciting and maintaining causes. What can be the maintaining factors? What were the exciting causes for starting of the drug addiction? In this study, in 50 cases, the causes were either loneliness. I'm talking of my study. 50 cases, the causes were either loneliness, disappointments in life or love, or aggressive behavioral pattern. Physical symptoms. Now, in this approach, we ignored these physical symptoms majorly. Objective symptoms were considered. Additionally, patient's attitude towards sickness, his mental reactions, will, understanding, and orientation were also considered. Now, this was a sample case which was dealt on mental symptoms. A 23-year-old male student of BCom in the university started consuming smack since 85. This I'm talking of 88. For about so many years he was taking. And during the withdrawal phase, he was observed to be silent. When he was admitted at our center, I was attending 2-3 centers in a week. One day I was going at Majnu Katila Center, and the other was Adarsh Nagar, and the third one was Sarai Rohilla. On asking, he started weeping. And now this case I'm talking of is of Majnu Katila. When we asked why he is silent, so he started weeping and told that he is deceived by his parents, who got him admitted. Means जबरदस्ती उसको वहाँ पर admit कराया गया. He was never wanting to get admitted. So he says, I have some self-respect. They should have brought me here decently. I am an educated person. I am pursuing my BCom, and I am a student. And my parents should not have done like this. कि मेरे को पकड़ करके they have just admitted in the police post, because Majnu का टीला police post थी. जितने भी हमारे centers चलते थे, because it was under Delhi Police Foundation, so all centers were under Delhi Police, and either it was a police station or it was at a police post. So he said that he felt insulted on that and was irritable, especially during day. So that was our observation, that he was irritable. And this is said that he felt insulted. So he admitted that he feels repentance on his deeds. When we were interrogating why you started, how you started. So he said, I feel bad that I have started this and I am now an addict. And I am getting angry on this, why I started. And he said that I don't want medicine. I just want simply that my time should be over, because earlier we used to keep the patients for detoxification at these centers for about 10 to 15 days. So he said that I don't require, ठीक है, withdrawal phase आएगा, I would bear it, and then I will, whenever I get over it, I will go back. So that was what he told, that I don't require medicine. So on this basis, we took some symptoms, we converted them into rubrics, and we worked on through Kent repertory, weeping when spoken to, irritability, mourning, honor effect of wounded, because he said that I have self-respect, so my parents should not have done this. And he felt indignation, bad effects following. Reproaches, ailments after. Remorse, he was having guilt, remorse, that why should I have started? And he got angry, why I started, to anger mistakes over it, and refuses to take medicine. So these 8 symptoms we took into consideration. And no medicine was given on first day because he refused to take it. On second day, जब उसका withdrawal symptoms like rhinorrhea, नाक से पानी, nasal discharge, watering of eyes, generalized body ache started. So he came to us. He said that I need some help for this. So on repertorization, the medicine which came was Staphylococcus, which was the highest remedy. So Staphylococcus 203 doses stat was given, followed by Saclec. On second day, he was much better and his behavior changed. We were surprised. 50%, he was relieved of his withdrawal symptoms even. There was no rhinorrhea, watering of eyes got better, and body ache became better. And of course, anger we could not judge because we did not ask. So this is how we treated him. And on 4th day, patient himself asked to stop the medicine. He said that my body pains are over, my withdrawal phase is over. So fast, within 2-3 days, the things got over. And we were also surprised that how could this simple medicine like Staphylococcus, which came through repertorization, could help it. So this is one thing which we would have to understand, that management of drug addicts is not difficult. It's simply like any other case when we are to take the mental symptoms into consideration. But in this 50 sample cases, we did only on mental symptoms. So this was one case.
Now, approach number 2 on totality of symptoms. This was on totality of symptoms. Refer to aphorism 22 that says, but as nothing is to be observed in diseases that must be removed in order to change them into health, besides the totality of their signs and symptoms. So we need to have totality of symptoms, and nothing is observed except the signs and symptoms. So we need to know the organon and its principles and the aphorism word by word, line by line. Then only we will be able to justify homeopathic management in any case. Leave aside the drug addiction. I think many of us are following these. We have to understand this. Next, it says here the patient has to be treated in whole by taking all the symptoms, the totality, subjective, objective, and each symptom must be complete with respect to location, sensation, modality, and concomitant. If we can get, very good. If we don't get, it's okay. We need to take the subjective and objective. We have to observe that is one of the symptom taken into totality. For example, patient during withdrawal phase comes with the loose stool with pain in abdomen which persists after the stool. Stool contains mucus and blood, has profuse salivation, tongue is flabby. So he would require mug salt. Very simple. The total picture going toward mug salt, and it would definitely help in the withdrawal phase. Suppose second is patient is in breathing distress, and he says he is worse by walking. His distress becomes worse after meals and asthma. He feels like asthmatic with fullness of stomach. Nux vomica is definitely going to give relief. We need to understand these symptoms, the totality, what actually are the symptoms, the physical generals, and if at all we get the mental general also, that has to be included. Now, this is case example based upon totality. A male patient, 24 years, salesman by profession, taking drugs since last 4 to 5 years. During withdrawal phase, he came with the extreme restlessness, cramps, burning abdomen, which was better by cold food or cold drinks, vomiting immediately after eating, painless, debilitating diarrhea, empty gone feeling in abdomen, quickened respiration. All these symptoms was lying on left side. So we could assess these symptoms. Violent palpitation and anxiety was lying on left side. Slight exertion caused weakness and trembling. So this was worked out, and phosphorus came out to be the remedy. And we gave phosphorus 203 doses stat, which was given first day. Next day was slightly better. So only Saclec was given. Nothing much, nothing more was given. And on third day, it was about 60 to 70% better. So no medicine was required. Of course, we gave Saclec to the patient just by telling that the remaining features, the remaining symptoms will go off with this medicine. And on fifth day, he reported to be fine and himself asked to stop the medicine. So, पांचवें दिन he stopped. Yeah, I'm okay. My detox phase, which is generally going from 1 week, 10 days to 15 days. That's over. So this is the beauty of homeopathy. We need to understand. And third category approach is basically based upon the characteristic symptoms, PQRS. Aphorism 153 says that in this search for homeopathic specific remedy, the most striking, singular, uncommon, and peculiar are chiefly and solely to be kept in view. So all PQRS symptoms we must know, we must have to assess, we must have to see what the patient's body language and the patient's state of mind tells us. Here, if some PQRS are found during the withdrawal phase, whatever the withdrawal phase symptoms are there, remedy prescribed on these characteristic symptoms would definitely help. For example, a male 42 years of age, an addict during the withdrawal phase seemed to be apathetic, felt so strongly homesick that he did not wish to talk to others. Now, this was actually the peculiar symptom that he was feeling homesick and he was apathetic, not interested, dull. So acid fast comes out to be a suitable remedy which relieved him. Another case of an addict, 37 years of age, during the withdrawal phase, complained of severe pains in the limbs, body pains, that he could scarcely walk and felt as if his legs were separated from the body. जब उसने बताया कि मेरे को ऐसा लगता है मेरी टांगे मेरे साथ है ही नहीं. So on that basis, separated sensation was taken, separated sensation legs as if severed from the body, and stramonium came out to be the remedy. And stramonium 200, possibly we gave few doses, and it gave him relief within 24 hours. So this is the beauty of understanding the mental state and the peculiar symptoms, characteristic symptoms, and the totality. So this is what we did in these cases. This is the data analysis which we did
from urban area, it was 86% of cases were there. Rural, say 14% were there, and below 20 years of age, 6% cases, and majority of cases were you can see 20 to 29 years. So this is the basic 34 plus 36. Around 70% cases belong to this age group at that point of time. So this is the young age group. This is the productive age group when the person has to become either he must have to educate himself or he has to go into some job. These are the productive years of one's life, which the people got wasted in drug addiction. And 22% of cases were belonging to 30 to 39 or 40 years of age, and 2% was beyond 40. So we can overall see that this young age group is most important for this drug addiction. And 42% were married, and 54% were single, and 4% were divorced. 10% were illiterate, 6% was only up to primary standard, and higher secondary 76% were there, graduate in about 8%. And we could see the past police arrest record, because this is one of the important point, because drug addicts were caught because of the criminal behavior they used to show. I remember a case, one case was admitted just because he was brought from Tihar actually for de-addiction at this center. And at that point of time, Tihar jail में हमारा clinic नहीं चलता था. Tihar jail में भी start हुआ था de-addiction center Navjyoti का. That was long after we actually started at these centers of Navjyoti in Sarai Rohilla and this Majnu Patil and others. So that case was basically auto chalak tha, wo auto driver, and he murdered his mother, old mother, about 75 years of an old lady, his mother. Why? Because we came to know that he was a smack addict and he used to auto बेच दिया उसने, जो भी पैसा आता था उससे अपना smack खरीदता रहा. And then he even asked his mother to provide money, and the mother refused. Ki, beta, I cannot provide you money for this nonsense. So first he pulled his chain, gold chain she was wearing, and then he stabbed because she resisted. It was a very pathetic state, and he was actually jailed for the offense of the murdering his own mother. Can you believe these criminalities? So past police record was also important to understand. So 50% we could get, yes, there was a past police record, and 50% were not having the past police record, arrest record. And pre-morbid personality, we could understand that 63% we could not understand what was the pre-morbid. We could not get any kind of pre-morbidity. But 23% was psychopathic, and 14% was normal, like you and me. So they were not having any kind of things. And employment, as far as occupation is concerned, 37% was employed, 8% was unemployed, and self-employed was 55%. You see, the major chunk of the drug addiction, smack addiction at that point of time was 55% self-employed people, because they could get the money access easily and they can go to any extent. उनके पास काम है, बंद कर दिया, चले गए, स्मैक पी ली, कभी भी चले गए. Employed people, they have some limitations. They have to be there at their office at particular time from 9 to 5 or 10 to 6, whatever. Nature of employment, we could access that 48% was skilled, clerical 8, business people were 10%, small shop 10%, professional 2, and 2 were in agriculture. And age at which addicts started smack, 86% were addicted to smack in our centers. Rest 14% were either alcoholics or some other drugs. So let us skip this. Yeah, this is smack, 86%. Opium was 2%, alcohol was 4%, morphine users were 2%, and multi-drug like alcohol, pethidine, propane, mandrax, 6% were there. And duration, about 44% was about 2 to 4 years. This was the major chunk again. Up to 2 years or 12%. Let us skip this. And this was the possible reasons why they started the drug use. Due to self-interest, trial for fun or curiosity, 25%. Due to peer group pressure, we were just understanding earlier. The earlier speaker was talking about the peer group pressure. 50% people fell prey to this peer group. So this is a very important area that we need to target the peer group. We need to target the society.
how we need to devise the methodology, how this societal influences can affect the addict or a person to become addict. And there were some 20% cases who were having some conflicts, tensions, or disappointments, and 5% were due to fears of some physical ailments. This is the income chart which we could get. Let us skip that. Smoking addiction is also one of the important area. Do we have time? Already 8:40 is there. Hello? Hello? Am I audible? Hello? Yes, Yes, sir, you're sir, audible. you're audible. But I think time is running fast. So I think this is enough for today. We can skip further slide. because- Anupam, please unmute yourself. Anupam, you're trying to say something to Neeraj, sir. सर प्लीज कंटिन्यू वी आपके पास अगर टाइम है तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए आप बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है वी आर रेडी टू लिसन पर आपका टाइम भी ना शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बड़ी वरना ये महफिले अंदाज अधूरा रहता तो आप बहुत अच्छा रहा पर आपको भी जितना टाइम है प्लीज आप कंटिन्यू करिए So nice. I think I would just close after this addiction of smoking. Yeah. Because I have many things to share that we would do sometime later on if you invite us later on on some other platform, right? So let us see smoking tobacco addiction. Majority of smokers would like to stop smoking, and smoking bhi aise casual start hoti hai, and each year about 50% try to quit permanently. Jitne bhi smokers hain, chain smokers I'm talking of, smoking who become which becomes addiction. Yet only about 6% smokers are able to quit every year in a given year. 50% would try to quit smoking, but only 6% would be able to try quit. See this statistics. So about 94% smokers of tobacco would not be able to come out of it. And most smokers will need to make multiple attempts before they are able to quit permanently. So they would go to rehab centers, they would go for counseling sessions, they would go for treatments, whatever are available within their resources, but they would not be able to come out of it. Because smoking tobacco or smoking drugs like charas, afim, sulfa, ganja, all these which can be sniffed also through, there was a mention of some paper Dr. Bharat was telling about. That was, I think, paper that was named as, I think, OS oral substitute therapy, OST paper. So OSB OSB or OST. डॉक्टर भारत भूषण बताया था OSB बोला था OST, T for treatment. Treatment or therapy. Yeah, it is OST, not OSB. So anyway, these things are very commonly available. So they can also roll this paper and they can put something in it and they can smoke. I know a patient who used to come for his son. He was about 16, 17 years of age, and he was studying in a very good school of Noida. I would not name that school. So he got addicted to this paper, OST paper. So I was surprised. His father was telling me कि सर ये हमें समझ में नहीं आता कि ये पेपर लाता है और क्या करता है उसका. I have asked him to मेरे को पिक्चर दिखाओ उसका. तो he showed me the burnt, जिसको कहते हैं ना burnt paper का उसने. He shared with me the pics, but I could not understand कि what is it. मैंने कहा कुछ भी हो सकता है. Anyway, so this is also very commonly available nowadays in many top schools of Delhi. These drugs, especially this paper, is very much available. And God forbids, हम सब I think family वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो family में आने वाले होंगे, youngsters. So they must have to be very careful about their children who are going to top schools. Not only top schools, I am talking of every school, any school. It can be there in the government. Sorry, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Hello. You were saying something? Yeah, I'm listening. ये मुझे सुनने में गलती लगी है. ये OST नहीं है. पेपर जो है पेपर को हम क्या कहते हैं LSD पेपर है. लाइसर्जिक डाइथाइल जो एक नशा है उसके पेपर को हम मुंह में रखते हैं. LSD पेपर. LSD is also there, but you showed the picture.
हाँ, आपने जो पिक्चर दिखाई वो OST हाँ, वाला था। वो OCB है, OCB। OCT, ओके। वो पेपर है जिसमें हम कैनाबिस को रोल करके स्मोक Yeah. करते हैं। या एनीथिंग, एनीवे, थैंक यू फॉर करेक्शन। सो वो जो बच्चा है 16-17 इयर्स एज, जो 11th क्लास में था, तो ही वाज यूजिंग दैट पेपर एंड पॉसिबली ही मस्ट बी कंज्यूमिंग सम काइंड ऑफ ड्रग इन दैट. So the father showed me the burnt stubs of that paper. I couldn't understand what actually it is. I thought it is a secret. But anyway, let us go further. Now it happens that once person is taking the tobacco, there is a transient surge. There is slight brief euphoria when nicotine is taken, because it is nicotine, the cigarette, the tobacco, which is the alkaloid, active alkaloid. This surge is much briefer than the high associated with other drugs. Other drugs like cocaine वगैरह जितनी भी बाकी चीजें हैं, तो उससे ज्यादा इसका इफेक्ट हाई में ले जाता है. Nicotine increases the levels of neurotransmitter dopamine, which many of us may be knowing, which reinforces the behavior to taking the drug. तो dopamine एक happy hormone है जो जिससे behavior एक happy हो जाता है and the person becomes active, alert, and this would further, patient would be lured for consuming nicotine again and again. For many tobacco users, the long-term brain changes induced by continued nicotine exposure result in addiction. तो क्या है, एक सिगरेट पिया, दूसरा पिया, ऐसे करते 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 they would become addicted to these drugs. Tobacco, nicotine. Being without nicotine for too long can cause the regular users to experience irritability. Now, जो addict हो जाते हैं smoking के, so अगर वो नहीं smoke करते हैं तो they get irritable, they get the craving, they get depressed, there is anxiety, cognitive and attention deficits, they face sleep disturbances and increased appetite. So these, I know a lady who is a cigarette chain, addict, chain smoker. So he consulted me over phone. He said, how can I leave it? So मैंने कहा, when you try on your own to leave it. So she said, no, I can't, because I get irritable. I get, difficulty in sleeping. So मैंने कहा, see, you have already crossed that stage of reversal. So you need not only the medication, but you need very important management. And that cannot be possible just like that. कहते सर COVID है, I cannot come over. मैंने कहा, okay, you need to consult a psychotherapist as well for this withdrawal. So anyway, these kind of cases are very common. You may also be seeing, all of us may be seeing. People in withdrawal from nicotine experience neurocognitive defects, such as problems with attention and memory. जब withdraw करते हैं तो उनको क्या लगता है कि हमारी attention, हमारी memory affected हो रही है. Generally, cigarette smoke करते हैं लोग for gaining that alertness, for that quickness of sharpening their, alertness, behavior, quick responses, so that they can get everything easily. I have seen students consuming cigarettes or tobacco, because when we ask you why you are consuming, they say, sir, इससे हमारी perception ability अच्छी हो जाती है. We can solve the questions very fast. So that is their ideas. And what is the homeopathic approach in the management of smoking addiction? We need to try understand the individual who falls for smoking. It is not only for smoking, it is for any drug. We need to understand the individual behind the addiction, not the addiction itself. We need to visualize the person as a whole, what actually the person is, why he has fallen for these drugs or smoking, the background causes which led to addiction, the constitution, the underlying miasm, craving for stimulants is psoric or syphilitic in its domain. So consider those drugs that are pseudosyphilitic, and when the addiction keeps relapsing, we have to consider tubercular miasm, and as an intercurrent, we can go for tuberculinum. And remedies which can be used for tobacco abuse, very well remedy. First remedy of choice is caladium, gelsemium, ignitia. I think many of us are aware of this. Nicotine, nux vomica, phosphorus, plantago, spigelia, sepia, staphylococcus, tobacco, etc. So caladium is one remedy which is a strong, addiction for tobacco. And addiction to nicotine, avena, caladium is again coming. Ignitia, nicotine, nux vomica, tobacco. Tobacco desires for smoking. Now this is one rubric I got.
there is a desire for smoking. So here also caladium is on the top. Tobacco is the next remedy, which is just equal to caladium. And other remedies like arsenic, asarum, camphor, china, glutamine, nicotine, nux, वगैरह. These are all other remedies. And these are the remedies to stimulate disgust for tobacco. If tobacco addiction वाला patient आके कहे जी मुझे छुड़ाना है, please help me out. So the first remedy of choice again would be caladium, which has to be tried on. And mind it, this is one remedy which is given laurels in homeopathy for getting rid of tobacco addiction. So this will stimulate the disgust. Patient कहता है जी आपकी दवाई खाता हूँ तो मुझे मन ही नहीं करता. I get distaste for smoking. And another remedy is stephysagria. This also would lead to disgust for the tobacco use. And for alcohol addiction, many remedies are there like arsenic, alcohol abuse ailments from arsenic, asarum, bareta, lachesis, nux, opium, therein plus selenium, sulfur, sulfuric acid, and desire for alcohol. Now these are the group of remedies which have a strong desire for alcohol. Arsenic, asarum, capsicum, Crotellus horridus. Now this is very rare remedy which I came across in the ML Tyler. Clearly it has mentioned that Crotellus horridus is for desire for alcohol. It is a snake remedy. You see, two snake remedies, lachesis and Crotellus, both are coming for desire for alcohol. Hipposulf and sulfur is also there. And when we get family history of alcohol, there is syphilinum as one of the topmost remedy. And possible reasons of relapse are, again, this has already been discussed: non-acceptance by the society, suspicion from family or relatives, lack of willpower, going back, interacting with the same previous groups, lack of motivation to leave, interest to try again, trying other modes of drugs in hope to leave smack or any drug, getting stuck up in the craving leaving cycle. Now this is a craving leaving cycle during detoxification phase. क्या होता है कि पहले craving होती है, जब हम leave करने लगते हैं तो फिर से craving होती है. So during detox phase, the patients basically would like to have some softer things. कि smack छोड़नी है तो चलो alcohol ले लेते हैं, cigarette पी लेते हैं, गांजा ले लेते हैं. So this is a kind of cycle, craving leaving cycle, which a person gets stuck up in that. For that, we need to target. Possible fears like I discussed out, sexual weakness हो रही है जी, reduced efficiency है, हमारा output decrease हो रहा है, तो इसीलिए वो relapse करते हैं patients. Now I would not go beyond this. Dr. Anupam, I think it's about 8:45. So let us stop here because we need some questions to be discussed out if there are. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीरज. कहते हैं ना कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी. तो ये जो दो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं फरिश्ते दोनों, ये ऐसे लोगों को जो गिर रहे हैं उनको संभालते हैं और करते हैं. तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. और लोग आपको सुनने के लिए बहुत बता रहे हैं, लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि दोबारा आपको सुनना चाहते हैं. डॉक्टर भारत भूषण का तो है ये, डॉक्टर नीरज के लिए रिक्वेस्ट आ रही है. डॉक्टर अरविंदर, कोई क्वेश्चंस हैं क्या? Nothing as such, ma'am. Sir have already answered many of the questions that are there in the chat box. Okay. Homeopathic point of view for alcohol and smoking. So Dr. Neeraj sir ने बड़े अच्छे से slides में explain किया है वो. सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक तो दो क्वेश्चन है इनफैक्ट. एक तो ये तो बच्चों को स्कूल के बाद छोटे टॉफियों के रूप में तो दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे आजकल स्कूल्स के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को टॉफीज की तरह दिया जाता है, वो कौन सी ड्रग्स होती हैं? एक. और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब हम एडिक्शन की बात करें, हमने अल्कोहल की बात करी, हमने ड्रग्स की बात करी, टोबैको की बात करी, एक और एडिक्शन है जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज एडिक्शन टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. यानी कि जैसे गेम्स के लिए और फोन के लिए और लैपटॉप के लिए लोग बच्चा छोड़ते ही नहीं है. आई एम सीइंग मेनी पेशेंट्स ऑफ दैट कि जो गेम्स खेलने के लिए पूरी रात जागते हैं और पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ गेम्स खेलना चाहते हैं. सो दिस इज अ न्यू एडिक्शन. I think we should also incorporate in our addiction this also. Very well said, Dr. Anupam, because this is what is called as internet addiction, basically. And we are into the era and age when we cannot live without these technologies. And children, somebody, okay, yeah, people have to mute their, okay. So आज की डेट में देखिए, कोविड ने हमें सिखाया है, बच्चे हों बूढ़े हों हम सब हैं, वी आर ऑल्सो सिटिंग हियर ऑन द जूम यूटिलाइजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज ऑफ इंटरनेट, वाईफाई एंड ऑल दैट.
So this has, in a way, become a habit, not an addiction. We have learned, this is one of our behavior which we have learned over past 2 years during the COVID times. And बच्चों के स्कूल बंद थे, so their all education had gone on the technology only, on the mobile. And जो बात आप कर रहे हैं games की, yes, of course, this is to beat their boredom. When they get bored, so naturally they would go for these hi-fi games. पता नहीं कौन कौन सी games हैं, बच्चे देखते होंगे, of course. So this is a very valid question, and as parents it is very difficult for us to make them understand, particularly during these times when the child and the family is, you know, enclosed in the apartment. जब ये सब चीजें खुल जाएंगी, जब हमारे स्कूल्स खुल जाएंगे, खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल जाएंगे, ऑफलाइन मोड शुरू होगा, तो hopefully these things would have to come down. But by the time, I hope the time would be so much over that many of the children would have already got addicted to these mobiles or internet usage. I'm talking about the time pre-COVID time. There, I was treating a few students of very big school. I will not name it, and they used to go to hookah bar. And when I tried to, you know, give them medicine to revert back, and they got addicted to games instead of the drugs. So it was a milder form of that, but then it was very difficult for me to get them out of the games. But I think it should be included, because games, I'm not talking of internet for the purpose of study or for a purpose of interaction, but it is for instant gratification that they play games. Yeah, when you say about instant gratification, so here I would like to emphasize upon Sigmund Freud's trio, that is id, ego, and superego. So that means the children basically are supermost having id in them, which is basically player seeking principle. In those persons where the id is predominant, they will like to go for player seeking. They would have immediate gratification. So they would ask him, हमें अभी के अभी game खेलना है, अभी के अभी internet चलाओ. So this must have to be targeted from that psychological point of view. And how we can do, we have to really search for it. I think on this platform, I would like to ask everyone if we can devise some strategy to develop this strategy, how we can overcome this instant gratification, to reduce that instant gratification. Yeah. So no questions? In fact, मुझे लगता है जितना chat मैंने देखी है, it's full of compliments for the both speakers. इतने compliments आए हैं दोनों speakers के लिए, and everyone wants कि हमें और सुनना है. डॉक्टर नीरज का टाइम कम था, पर हम कोशिश करेंगे कि मैं दोबारा आपके साथ एक और सेशन जरूर करें. रिक्वेस्ट भी आई है बहुतों की, और डॉक्टर भारत भूषण के साथ तो नेक्स्ट फिक्स्ड है ये नेक्स्ट मंथ का सेशन भी. तो डॉक्टर वोट ऑफ थैंक्स देंगी डॉक्टर रुचि. मैम पहले कंपाइलेशन डॉक्टर शालिनी करेंगी. पहले समिंग अप करनी है. यस, समिंग अप भी तो करनी है. Ma'am, so summing up is here, ma'am. I have made a lot of notes, but considering the time constraint and बहुत सारी चीजें डॉक्टर नीरज ने भी दोबारा कवर करी जो डॉक्टर भारत भूषण ने कही थी. So primarily what was most striking about the presentations today was the kind of information we got about various drugs. By the pictorial depiction जो आया, जो you know pictures के through, diagrams के through, how we as doctors or medical providers can distinguish, or you know, for our information, come to know what kind of drugs are available. Then the classification he gave, that how the drugs are classified, then how people are taking them, you know, in various ways, how they are taking orally, how they are taking through smoking and all that. Then there was a very important factor of how we can control them. So the homeopathic approach, of course, came very beautifully with Dr. Neeraj. But उससे पहले डॉक्टर भारत भूषण ने जो हमको बेसिक बताया था, the three different approaches, you know, how to stop the progress of this. So one he told was the supply reduction, the demand reduction, and the harm reduction. So the first step, of course, the supply reduction has to be controlled by the narcotics department, which doesn't have a role. But the demand reduction में हमारा as health providers role आता है, where we can educate and treat the patients and you know, hopefully reduce the demand.
And then of course harm reduction again, were other kind of things where the needle exchange and other things, which again possibly as health providers we can also play our role there. Then of course came Dr. Neeraj's presentation, wherein he covered everything so wonderfully, especially the homeopathic approach, covering the smoking and the alcoholic addiction, wherein the primary homeopathic drugs, which can be used, which is of most interest to many of us here. So sir mentioned that how, caladium came out as the most effective remedy for smoking. And for alcohol, he said there was arsenic, aurum, and other group of drugs. And also he told us that how the patients can go into relapse, and for that we need to control the behavior part and the social cocooning, which is very much required. Right? Anything else, sir, which I missed, which is more important, please? No, you have covered everything, more than what we spoke. Thank you. Thank you, sir. Dr. Ruchi? Dr. Ruchi, are you there? Dr. Ruchi, we can't hear you clearly. डॉक्टर रुचि की आवाज नहीं आ रही, इको हो रही है, एक्चुअली इको बहुत हो रही है उनकी उसमें. I think she has connection, internet connection issue. डॉक्टर अरविंदर, आप वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए प्लीज. मैम एक सेकंड, डॉक्टर रुचि फिर से लॉग इन कर रही हैं. जस्ट अ सेकंड. इफ शी इज नॉट एबल टू, इफ यू आर नॉट एबल टू हियर, देन आई विल डू द वोट ऑफ थैंक्स. डॉक्टर रुचि, ओवर टू यू. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. I think I'll continue with the vote of thanks. Thanks to both our speakers, Dr. Bharat Bhushan and Dr. Neeraj Gupta sir. Neeraj Gupta sir को सुनकर तो ऐसा लग रहा था वापस कॉलेज टाइम में पहुंच गए. It was an honor to be your student, sir, and it was an honor today to rehear you and enjoy your lecture. We are looking forward to have both of you again with 2-hour session, as there are so many requests in the chat box from all the participants who are here, and so much of knowledge to gain from both of you. Thank you to the Edwin, our sponsors, for today's session, and thanks to all the participants who took out time to learn more and enjoy the session. Hope you all enjoyed the wonderful session. The time limit was less and learning was more. Looking forward for more sessions with Dr. Bharat Bhushan sir and Dr. Neeraj sir. Thank you so much, everyone. Over to you, Dr. Anupam. I also want to thank the doctors who did the work in COVID, and they came here and we honored them. I also want to thank them. And I also want to thank my team, my wonderful team. Dr. Farooque भी मुझे नजर आ रहे हैं, अभी डॉक्टर हेमेश ठाकुर भी थे, अभी तो उस समय मुझे नजर नहीं आए थे. और हमारी टीम डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर अरविंदर, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर हेमेश का नाम दिख नहीं रहे. डॉक्टर हेमेश अभी कहाँ है, शायद मुझे दिख नहीं रहे. ये सारी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. दोनों स्पीकर्स का तो तहे दिल से शुक्रिया, डॉक्टर अरविंदर ने कह ही दिया है. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, हमारे ड्रीम्स के प्लान है, मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया. अगली बार हम फिर कंटिन्यू करेंगे. तो गुड नाइट टू यू ऑल. Thank you and good night from my side to everyone. Thank you. Thank you, Dr. Neeraj, Dr. Anupam, and your wonderful team. और मेरे प्यारे listener, dear homeopaths. Sir, it was a pleasure listening to you. मतलब everyone was mesmerized, कोई हिला ही नहीं. इतने सारे, in fact there were more people in waiting room than waiting room में बहुत सारे लोग wait कर रहे थे आपको सुनने के लिए. It was fantastic session. Once again we will meet. Hasta la vista, hasta na mana. Thank you. Thank you.